हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। अगर आप भी मेरी तरह किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो किसी ना किसी टाइम आपने अपनी लाइफ में ये ज़रूर सोचा होगा कि आज से 5 साल 10 साल बाद मेरा एक खुद का घर हो। एंड उसके लिए आप बहुत ही टाइम से सेव करना शुरू कर देते हैं। Be it any earnings from your job, anywhere, it goes towards the saving so that you can buy that dream home someday in future. आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, सीए से बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करते हैं, एंड दे ऑल विल टेल यू द सेम थिंग दैट रियल एस्टेट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड गिव्स यू द मच नीडेड बेनिफिट्स, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। बट अगर मैं आपसे कहूं कि रियल एस्टेट इज नॉट दैट ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट एंड देयर आर मेनी मोर इन्वेस्टमेंट which gives you better return and risk profile than real estate, तो आपको कैसा लगेगा? मेरी बातें में चाहिए, let's discuss this in the video। आइए शुरू करते हैं। Alright, तो शुरू करने से पहले आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है that real estate prices are cyclical. So if the economy is going well, if economy is doing well, the price can go up by a lot. But if economy is doing poorly, the price can go down by a lot too. अगर आपको याद होगा, so 2000 से 2010 के बीच में the real estate market was at peak. The average return on real estate could be as high as 20-30%. कुछ लोगों ने तो 50 से 100% भी कमाया है real estate पे। But after the 2010-2008 financial crisis, the prices started going down drastically all across the world. Though it did not affect India that much, but जो major point आया वो आया 2015-2016 में जब banks ने अपने NPAs डिक्लेयर करे। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन 2018 का वाज अ ह्यूज सेटबैक फॉर रियल एस्टेट मार्केट व्हेन दैट NBFC डिफॉल्ट हैज अकर्ड। दैट वाज लाइक द फाइनल नेल इन द कॉफिन। उसके बाद से मार्केट कभी उठ नहीं पाया। दैट वाज अ ह्यूज सेटबैक फॉर द रियल एस्टेट मार्केट। तो इसका मतलब ये है कि इवन आफ्टर अगर आपने 2000 से 2010 के बीच में मान लीजिए 50-100% किसी प्रॉपर्टी में कमाया है, डजंट मीन कि आपको वही रिटर्न इस टाइम पे भी मिल जाएगा। द मार्केट हैज नॉट बीन दैट lucrative as it was in the last decade. The fundamentals have changed, the dynamics have changed. So it's really important to analyze the market, analyze the property specifically before purchasing it, right? Let's talk real numbers here. आज से 2 से 3 दिन पहले मैं दिल्ली में था एंड आई वाज लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी। आई वाज स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर अ फ्लोर एरिया, मान लीजिए 150 से 200 गज के बीच में। एंड मैं जितने भी प्रॉपर्टी डीलर से मिला, सब ने मेरे को जितने भी घर दिखाए, दे वर इन द रेंज ऑफ अराउंड 1 to 1.5 करोड़। लेट्स टॉक रियल नंबर्स हियर। मान लीजिए जो प्राइसेस उन्होंने दिखाए मेरे को, दे वर अराउंड 1.5 crore, right? For 2 bedroom, 3 bedroom, floor, right? Now, the first thing that you should always do, it's the most important thing and most basic thing that you should always do while buying a property is look at the earning yield. Now, earning yield क्या होती है? Earning yield is just the earning that you are going to get from the property in next year, divide that by the price. आपकी प्रॉपर्टी से अर्निंग क्या है नेक्स्ट ईयर? अगर हम अभी अप्रिसिएशन कंसीडर ना करें तो जो भी आपका रेंट मिलेगा एक साल में उस प्रॉपर्टी पे, डिवाइड दैट बाय द प्राइस। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, अज्यूम कीजिए कि आपके पास ये खुद की प्रॉपर्टी है एंड आप इसको रेंट पे दे देते हैं, तो कितना रेंट आपको मिल पाएगा? दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज इन द न्यूमरेटर, दैट इज द रेंट। सो उस प्रॉपर्टी पे जिसका प्राइस था 1.5 करोड़ रुपए, जो रेंट है rent was just 20,000 rupees. That's for 1 month. So 1 year rent is going to be this into 12. It's going to be 2.4 lakh. Right? तो earning yield क्या बनी हमारी? This becomes around 0.018, which is just 1.8%. Now,
अज्यूम कीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई अप्रिसिएशन नहीं है, लेट्स अज्यूम दैट अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदे और उसको रेंट पे चढ़ाए तो द अर्निंग यील्ड दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज जस्ट 1.8%. इट्स एक्सट्रीमली लो. इमेजिन जो जीडीपी की ग्रोथ है इंडिया में ऑन एवरेज, दैट इज around 4 to 5%. In some cases it was around 6%, right? Which means cumulatively GDP क्या होता है? Cumulatively आपकी इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है? Now अगर cumulatively हर साल इकोनॉमी 4, 5, 6% ग्रो कर रही है and then real estate prices पे आपको सिर्फ 1.8% earning yield मिल रही है, that extremely low. That brings us to our second point. Now पिछली बार जो हमने डिस्कस करा वो था earning yield, which is just the earning, the rental income that you are going to get from the property next year, divide that by the price. But we missed a major point there, which is the price appreciation. Now, in India, rents may be really low or may go high, but the price appreciation of a property is actually the major component of the returns. Now, assume, इसमें मान लीजिए हम इसमें assume करते हैं कि आज से 5 साल बाद आपकी property जो appreciate होती है, they appreciates by let's say 50%. So, write the numbers here again. Say the price of the property was 1.5 crore, right? And growth is after 5 years, it's going to be 50%. Now 50%, which means after 5 years the property is going to be around 2.25 crore, right? Now the 1 year rent was 2.4 lakh. Assume हर साल आप अपना रेंट 10% से बढ़ा रहे हैं. ऐसा होता है टेनेंट्स को, हर साल आप 10% रेंट बढ़ाते हैं. तो what we are going to do is calculate each year returns after considering that 10% growth. So first year आपका रिटर्न, आपका जो रेंट था वो था 2,40,000. सेकेंड ईयर आपका जो रेंट होगा वो होगा 2,40,000 प्लस आपने उसको 10% से बढ़ा दिया, which becomes 2,64,000. Right? Now I'm going to use a calculator here. थर्ड ईयर में आपका जो रेंट होगा वो होगा this number into 1.1, which means 2,90,000. फोर्थ ईयर में आपका रेंट होगा this number into 1.1, which is 3,19,000. Now fifth year, first we'll get this rent, which is around 351,384. Right? This is yearly rent in year 5. But after this, we'll also sell the property, and the prices of the property has gone up by 50%. So we'll get this as well. Now, the way to calculate the return is basically what we do is we draw a timeline. So this is here we are right now. Now the first year, again the first year rent, second year rent, third year rent, fourth year rent, and this is 5-year rent plus the property price at year t plus 5. Okay, now that is this price. Now if we calculate the price of the property right now, if we calculate the return, what we do is we calculate this number, IRR. Now it's the internal rate of return. इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात कर सकते हैं, but imagine this is the each year return that you will get after considering the future cash flows, future rents and future property prices. So we drew this timeline, and then we have all the rental incomes. Now if I calculate the internal rate of return on this property after paying 1.5 crore initially, my internal rate of return is going to be 10.1%. Now some of you might say that this is not that bad actually, right? 10% you're getting on a property, but there's a major caveat here, right? If you look at the prices, if you look at the return in the period 2000, 2010, 2015, the average return on the property prices were around 20%, 30%, 50% even in some cases. But if you consider it now, it's around 10%, 7%, 8%, which is extremely low, relatively speaking.
मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी लेने से, बट ऑल आई एम सेइंग इज देयर आर मेनी मोर सच इन्वेस्टमेंट्स व्हिच कैन गिव यू अ बेटर रिटर्न प्रोफाइल देन रियल एस्टेट एट दिस पीरियड. बट अगेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये एनालिसिस करें बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी एंड पुटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इनटू अ रियल एस्टेट, because the fundamental dynamics change very frequently and as I said the prices are cyclical. So अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, please like the channel, subscribe the channel, it helps me and also helps the channel, motivates me to make more such videos. अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम इसी प्रॉपर्टी पे considering all the numbers same कैसे हम इस पे 10% से ऊपर का रिटर्न कमा सकते हैं. I hope to see you in next video. See you.